Hello students, how are you? I hope you all are doing very well in your day-to-day life. So students, that is English classes for your class, obviously 9th, and which is presented by none other than, that is Puri ma'am. You all know very well. Let's continue to today's video. Students, कल के वीडियो में मैंने एक बहुत बड़ा सा नोट लिखा था, वीडियो में नहीं, व्हाट्सएप पे, बट मुझे किसी का कुछ रिप्लाई नहीं आया. आप लोगों ने क्या वो मैसेज पढ़ा है तो अच्छी बात है, और डीपली आपने पढ़ा और समझा वो और अच्छी बात है. लेकिन ये एक रिक्वेस्टिंग मोड पे मैसेज था स्टूडेंट्स. क्या मैसेज था उसमें? सिंपली क्योंकि ऐसे बहुत से टीचर्स है, लास्ट 2 डेज में स्टूडेंट्स रेगुलरली मुझे टीचर्स की या तो कॉल आ रही है या व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आपकी क्लास के इतने बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं, या आपकी क्लास के इतने बच्चे गूगल में क्लासरूम में अटेंड नहीं कर रहे हैं, या एब्सेंट है, या ज्वाइन ही नहीं किया है. और मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगा ये सोचकर कि मेरे बच्चे जो 9th A1 के बच्चे हैं, जिनकी मैं रिसेंटली क्लास टीचर बनी हूँ, लेकिन सब्जेक्ट टीचर मैं उनकी बहुत पहले से हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा था बच्चे इस तरह से भी होंगे. बट जो बच्चे रेगुलरली कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरी क्लास में तो लगभग सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सेप्ट समर्थ ही नहीं मुझे आंसर देते, और मीर खान. अदरवाइज मोस्टली 1 day और 2 day 1 और 2 ऑल्टरनेटिवली मुझे रिस्पॉन्स करते ही हैं बच्चे. म्यूट भी रहते हैं कई बच्चे, लेकिन फिर भी जनरली आंसर करते ही हैं. लेकिन आप बाकी सब्जेक्ट में भी वैसा ही अपना एक लेवल बना के चलें और वैसा ही सपोर्ट बना के चले तो ज्यादा बेटर होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको उस मैसेज का मीनिंग क्लियर हुआ होगा, और स्पेशली जिन लोगों के लिए वो मैसेज है, होप सो वो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और गूगल क्लासरूम में जिस किसी भी सब्जेक्ट के गूगल क्लासरूम में आप ज्वाइन नहीं हैं, प्लीज ज्वाइन दैट गूगल क्लासरूम प्लीज, और आंसर देने की कोशिश कीजिए. जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे आंसर देने में, उतना ही आप प्रिपेयर होते जाएंगे, सिर्फ अपने पीए के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि ऑनलाइन की स्टडीज इसी पे बेस्ड है. आप जितना वीडियोस देखेंगे, आप जितना क्वेश्चन आंसर्स में इन्वॉल्व होंगे, उतना ही आपको समझ आएगा कि आप पढ़ रहे हैं, रिविजन हो रहा है एंड ऑल दैट. इट्स नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम. सो स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आया होगा आपको, आप उसके अकॉर्डिंगली वर्क भी करेंगे. इसी होप के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं. दैट इज यूनिट 3, द लिटिल गर्ल, विच इज रिटन बाय कैथरीन मैंसफील्ड. सो स्टूडेंट्स, अगर प्रीवियस वीडियो याद हो आपको, तो आपको याद होगा कि जब उसके पापा जी ने उसको खूब डांट दिया था, उसके डैड ने, किसके डैड ने? केजिया के डैड ने. और क्यों डांटा था? क्योंकि केजिया ने उनके जो स्पीच के पेपर्स थे वो टेयर करके जो कुशन बना रही थी अपने फादर के बर्थडे गिफ्ट के लिए, उसको फीड कर दिया था, उसकी स्टफिंग कर दी थी. उसे भी नहीं पता था कि पापा की स्पीच के पेपर है, शायद वो नहीं भी करती, लेकिन शी डिडंट नो एंड शी डिड दिस अननोइंगली. लेकिन इसके लिए उसको बहुत डांट पड़ी, बहुत ज्यादा डांट पड़ी, and due to which she has suffered a lot. And afterwards she told to her grandmother also कि why God made the fathers, but when on her neighborhood, अपने neighborhood में वो ये सीन देखती है. Just have a look. ये मैकडोनल्ड्स की फैमिली है, ये मिस्टर मैकडोनल्ड्स हैं, इनकी 2 सिस्टर्स 2 डॉटर्स हैं, 3 सन्स हैं ऑल अराउंड. देखिए, और ये कितने मजे से उनके डैडी उनके साथ खेल रहे हैं. हैव अ लुक. और दिस इज अवर केजिया, ये छोटी सी हमारी केजिया है. और ये केजिया देखिए, here written is the note, the little girl saw through the gap. ये फेंस के गेट्स के गैप है. देखिए, फेंस होता है आउटलाइन की जो बाउंड्री होती है, और उसके बीच में जो थोड़ा सा गैप्स होता है. जस्ट हैव अ लुक. केजिया यहाँ से अपनी आंख से अपनी आई को शट करके, 1 आई शट करके, दूसरी आई से इस गेट के या फेंसिंग गेट के अंदर से देखती है कि कैसे मैकडोनल्ड्स के जो फादर हैं वो खेल रहे हैं टैग इन द इवनिंग में. तो दैट वाज द सीन. एंड देन शी केम टू नो कि नहीं, पापा सब एक जैसे खड़ूस नहीं होते हैं, पापा बहुत प्यारे भी होते हैं, जैसे कि इनके फादर हैं, इनके पापा प्यारे भी हैं. तो दैट्स नॉट कि पापा ऐसे खड़ूस ही होते हैं, यानी कि अलग अलग वैरायटी के फादर होते हैं. चलिए, नाउ लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो. बट व्हाइल एलिस वाज पुटिंग हर हेड टू द बेड, शी ग्रू सडनली अफ्रेड. अब क्या हुआ था लास्ट वाले वीडियो में? पैराग्राफ 9 हम फिर से सर्च आउट करेंगे. स्टूडेंट्स, अपनी बुक में वापस देखिए. लास्ट 2 लाइन्स पे हमने क्या पढ़ा था? द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस. एक दिन क्या हुआ? उस छोटी लड़की को घर में अकेला रहना पड़ा. एलिस कौन थी? कुक थी उसके साथ. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. दिन में तो ठीक था, मीन स्टिल इन द डे टाइम तो शी कैन मैनेज टू लिव अलोन ऑल्सो विद द कुक. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, शी ग्रू सडनली अफ्रेड. और जैसे एलिस उसको सुलाने के लिए तैयारी करती है, मीन्स इट्स गेटिंग लेट नाइट,
and the mother and grandmother both. So students, what did we came to know? Because mama, her mama became so ill, that is why her grandmother took her to the hospital. So nobody was at home, she was all alone with the Alice. Till daytime she was okay, but when it became night, so she became a bit afraid. Clear? Let's begin 10th one, the paragraph. What's all I do if I have a nightmare? Nightmare means horrible dreams. Horrible or horror, full of horror dreams. Means I am sleeping, but suddenly if I saw a very horrible thing in my dreams, then what I will do? Generally, maybe if she is sleeping with a grandmother or with mother, so she used to cling them up or embrace them up. Like होता है ना, जैसे आप भी अपने मम्मा पापा के साथ सोते होंगे, रात को अगर कुछ ऐसा सपना, डरावना सपना आता हो, तो डर के मारे नींद भी खुलती होगी, तो you used to hug up. और जो बच्चे अकेले सोते होंगे, that is the different way, वो अकेले ही फेस करते होंगे जो भी हॉरर होता होगा, whatever is there. But she asked, I often have nightmares and then granny takes me into her bed. Mostly क्या होता है, मुझे nightmares आते हैं. Nightmares means horrible dreams आते हैं. And then my granny means my grandmother used to hold me and take her to her bed. I can't stay in the dark. I can't live in the dark. It all get whispery. Whispery means as something is speaking in my, or somebody is speaking very, very in a low voice, and it gives me a great shock or a great afraid. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. Means you just sleep down and don't you scream. Scream means to shout in a loud voice and wake your poor pa. And your papa is also sleeping. Your papa is also very much tired in the office work. He came and he is sleeping there. Or if you will scream, if you will shout, so what will happen? Your father will also wake up. So it's not good for your father also to wake up. So don't make your father also wake up. Sleep quietly here, beta. And this way she told. But the same old nightmare came, and then she tried to sleep. But suddenly what has happened? The same old nightmare, same dangerous dream came. The butcher, and what was a dream? A butcher is there. Butcher, one who cut the pieces of meats for you. So a butcher with a knife and a rope, रस्सी जिसे हम कहते हैं, who came nearer and nearer, smiling and dreadful smile. और वो बहुत horrible सी smile, जैसे होता है ना, कोई आपको डरा रहा है, उसके हाथ में नाइफ है और वो भी बुचर है और वो आपके क्लोज आ रहा है, आंखें दिखा रहा है और बड़ी गंदी सी हंसी हंस रहा है, बिल्कुल डरावनी सी. That's why smiling and dreadful smile. While she could not move, and she couldn't move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. Clear? In the same manner, she was sleeping or watching the dreams, and suddenly when she saw a butcher with a knife and smiling and targeting the knife towards her, so she started to shout in her dream, Grandma, Grandma. But when she woke up, shivering means just entire body is shaking with fear. So she saw the father beside means near her bed, and father is holding a candle in his hand, and the father asked gently, what's the matter, beta? Why are you shouting? Now, what did she do? What did she answer, students? When the father is asking that, what did she answer? She just said. That was the, she said, oh, a butcher, a knife, I want granny. The way she answered, like she is unable to speak or express her words in a proper manner. That's why she said, oh, a butcher, a knife, I want granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm. Who is he here, students? Father. What the father did? Blew off the candle, bent down and caught tightly the child into her arms, carrying her along the passage. Passage means the way to the big bedroom. He took her to his own bedroom. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. These all things were spread on his bedroom. He put away the paper. The father put away the paper. Cigar also he threw into the fireplace. Then carefully tucked up. Tucked up means covered or wholly or nicely hold the girl of the child. He lay down beside her, and then the father made the Kezia lie down on the bed, and the father also lie down nearby the daughter, half asleep still, and he couldn't sleep properly. So half asleep means not properly slept, still with the butcher's smile, because still she is thinking
The butcher is smiling all about her, it seemed. She crept close to him. Then, because she was in fear, so she went very close to her. Then she moved with a warm, comfortable to his head. Means her head she touched to the chest of the father, crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. And then when she became very close to the father, then she did not afraid to that dark. Here, rub your feet against my leg and get them warm, said father. Means you just keep your feet on my legs and then your legs became warm. Don't worry, I am with you. This way the father tried to console her. Then let's have a last para of the chapter. Tired out, he slept before the little girl, because the father was very much tired of the entire day work. So he slept before her. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. Means father was big enough, and why the father is poor? Because nobody is there at home to look after the father. And after him, he was harder than grandmother. Harder than grandmother means like he was helping me as my grandmother, but it was a nice hardness. Means the way my grandmother hold me tightly, hardly, in the same manner, the father is also hugging me and holding me tightly. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. And like McDonald don't have that much work, but my father have a lot of work. That is why maybe McDonald getting time to play with the children, but my father don't have time to play with me like Mr. McDonald. So she had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed, and she stood up, torn up all his beautiful writings. And what did she do? All the speech pages which she has stored up, she was remembering how I teared all the pages. She stood suddenly. Stood means stood up suddenly and sighed, took a long breath. What's the matter? Asked her father. Another dream? Then again the father asked, what happened, beta? Why did you get up? Have you dreamed again or any another dream? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. And that was the end of. What did she say? My head was near your heart, father, and I can hear the sound of your heart, father, and you are a dear father, like so. In this way, we came to know that finally she is able to love her father, and the fear which she was having before, that was flew away. So students, in today's session, we have ended up. That's written by Catherine Mansfield. We finished up. In the tomorrow session, we will discuss the question answer. That's all for today. Stay safe, stay tuned. Bye-bye.